And why the birth rate, it fell less than that of the death rate? Because of improved control over famines, epidemic diseases. ठीक है, ये सब के कारण। तो वही चीज यहां पे दिया हुआ है कि ये देखो, I'll show you here कि the principal reason for the decline in death rate after 1921 was increased level of control over famines, epidemic disease, and the latter cause was perhaps the most important, and the major epidemic disease in the past were fevers on various sorts, plague, smallpox, cholera, but the single biggest epidemic was influenza epidemic 1918, which killed 170 lakh people, that is 5% of the टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पे हम यही बोल सकते हैं कि जो रीजंस थे, रीजंस फॉर शार्प फॉल इन डेथ रेट आफ्टर 1921, reasons for the sharp fall of death rate after 1921 was number one, improved control over famine. फेमाइन क्या होता है? भूखमरी। improved control over famines, and also second, improved control over epidemic, ठीक है, improved control over epidemic diseases. So that's why there was a sharp decline in the death rate. ठीक है, because we can say that famine as well as epidemic diseases, they were managed properly. So as a result, the death rate reduced at a sharp, मतलब at an increased, मतलब वो, and we can also see that मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, ये सब चीज तुम्हारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। एक मिनट ओके, सो द प्रिंसिपल रीजन आई सेड यू, एंड वन मोर थिंग हियर, इट्स सेइंग दैट द मेजर एपिडेमिक डिजीजेस in the past were, you must remember this one also, major epidemic diseases, ठीक है, major epidemic diseases, they were smallpox, plague and cholera। ये मेजर एपिडेमिक डिजीज है, और इसमें 1918 एंड 19 इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन इंडिया। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से कितने लोगों का डेथ हुआ? राउंड अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज हाउ मच? 170 लाख पीपल। पीछे डेटा कुछ और दिया हुआ था, पीछे डेटा क्या दिया हुआ था? 12.5 मिलियन पीपल, और यहां पे 170 लाख बोल रहा है। So there is a controversy with regard to the data भाई, तो प्लीज ये डेटा को थोड़ा सा देख लेना, because the global influenza pandemic हुआ
1918-19 में इन्फ्लुएंजा, और ये एस्टिमेट्स ऑफ डेथ वेरी एंड सम आर मच हायर, इसको स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, एंड द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक वाज अ ग्लोबल फिनोमिना। सो ये स्पेनिश फ्लू के बारे में है। दैट इज द वायरस, इट अटैक्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट इज द वायरस, इट विल अटैक योर नोज, it will attack your throat, it will attack your bronchi and also the lungs। और जो जेनेटिक मेकअप है इन्फ्लुएंजा वायरस का, it allows for both major and minor genetic changes, that is making them immune to the existing vaccines। मतलब आप लोगों ने जो वैक्सीन लिया हुआ है, इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि दे आर इम्यून, दे मेक देमसेल्फ इम्यून। इम्यून का मतलब दे मेक देमसेल्फ मतलब फिट with regard to the existing vaccine। 3 times in the last century, the influenza virus have undergone major genetic changes, resulting in global pandemics and large tolls in terms of both disease and death। The most infamous pandemic was Spanish flu। प्लीज रिमेंबर, ये स्पेनिश फ्लू, और ये अफेक्ट किया लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड इट इज थॉट टू हैव किल्ड 40 million people in 1918-19। More recently, 2 other influenza pandemic occurred in 1987, Asian influenza and 1987 Hong Kong influenza, और ये भी significant morbidity और mortality cause किया। The global mortality rate from 1918-19 Spanish flu is not known, but it is estimated at 2.5 and 5% of the human population। ये वही है, पूरा एक बार आप रीड कर लेना, इसमें कुछ कुछ आपको सब दिया रहेगा, you have to remember that। So this 5% of the total population ऑफ इंडिया। सो प्लीज गूगल के थ्रू ये पता कर लेना कि 1918-19 में जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इंडिया में हुआ था, हाउ मच वाज द डेथ, बिकॉज इनिशियल पेजेस में इट इज रिटन 12.5। ठीक है, इन द इनिशियल पेजेस इट इज रिटन 12.5, यहां पे ये देखो 12.5 million persons, but here it's writing 170 lakh। तो ये थोड़ा सा एक आपको कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर। देन वी कैन से दैट हाउ डिड, what were the causes why the death rate decreased? The first one, it is with the improvement in medical cures for these diseases, programs of mass vaccination, efforts of improved sanitation help to control epidemics। However, diseases like malaria, tuberculosis, diarrhea, dysentery continue to kill people even today, although the number are nowhere as high as they used to be। But Surat, it witnessed a small epidemic of plague in September 1994, while dengue and chikungunya epidemics are since then reported। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि this is important, remember whatever I have said here, that is how the epidemics are controlled। ठीक है, कि reasons for control of epidemics। रीजंस में सबसे पहला इंप्रूव्ड मेडिकल क्योर। ठीक है, improved medical cure, number 1। Number 2, improved medical cure of these diseases।
Number 2, mass vaccination. Mass vaccination means the people, they are being given injections. That is mass vaccination. ठीक है? And third, it is efforts to improve sanitation. Sanitation in the sense cleanliness with regard to drinking water and all. ठीक है? So that is what. But still we can say that significant diseases like malaria, tuberculosis, diarrhea, dysentery, ठीक है? That means diseases which still are posing threat to human life. Diseases which are still posing threat to human life. Usme one is malaria, the other one, the second one, it is TB, that is tuberculosis. The third one, it's diarrhea. ठीक है, diarrhea. And the fourth one, it's dysentery. And please remember Surat, small epidemic of plague. It happened in 1994. And even we are facing problem with 5th, dengue. And 6th, it's chikungunya. So these are the diseases even which are still prevalent as per today. Clear? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।